Hey everyone, welcome back to our channel Marketriti, जहाँ पे हम लोग इंडियन मार्केट्स के ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं. Mostly we discuss the Nifty strategies. Over the period of time, we will bring in Bank Nifty and other stock strategies. So, quick summary of the video which we are going to discuss today. आज हम लोग बात करेंगे निफ्टी की एक्सपायरी की, जो हमारी वीकली एक्सपायरी होती है. We will be talking about out of the money strangle playbook. Basically, we will be selling call and a put, which is OTM on the Tuesday expiries, Tuesday Nifty expiries, right? So the entry would be around 10:05 to 10:20 का ये जो विंडो है उसके अराउंड हम लोग एंट्री करेंगे. हम सेल करेंगे कॉल एंड पुट जिनका प्रीमियम 8 to 12 रुपीज़ के बीच में होगा. बेसिकली आपके आउट ऑफ द मनी कॉल एंड पुट्स होते हैं जिनका प्रीमियम क्वाइट लो होता है बिकॉज इट्स द एक्सपायरी डे, राइट. और इनका डेल्टा भी काफ़ी लो होता है. सो इसका अवॉइड करेंगे कि जो 6 या 12 रुपीज़ के ऊपर के है, बिकॉज 6 इज टू लो ऑफ अ प्रीमियम एंड 12 इज टू रिएक्टिव ऑन द एक्सपायरी डे, राइट. हमारा स्टॉप लॉस सिंपली डबल ऑफ द प्रीमियम होगा ऑन ईच ऑफ द लेग्स एंड वी विल बी एग्जिटिंग द एंटायर पोजीशन जब हमारा कोई भी स्टॉप लॉस हिट हो जाए. और हमारा टारगेट ये होगा कि 25 to 35% ऑफ द कंबाइंड प्रीमियम. अगर हम लोग 8 रुपए का कॉल 8 रुपए का पुट बेच रहे तो जो टोटल 16 रुपीज़ प्रीमियम है, वी वुड टारगेट एटलीस्ट 25 to 35% melting of that premium. और जैसे ही हमारा ये टारगेट कंप्लीट होता है, वी विल जस्ट एग्जिट द एंटायर ट्रेड. So that's the entire summary of this video. So let's deep dive a bit. Okay, again, so this is prepared by me. So I'm your host Mahesh, and just to give a quick disclaimer, I'm not a SEBI registered research analyst or investment advisor. ये जो document है, this is for educational purpose only and reflect my personal trading experience or approach. This is not investment advice or a trade recommendation. So all these strategies kind of carry a lot of risk. So please do your own research, evaluate own risk appetite, maybe like even consult a SEBI registered advisor before you try anything crazy, right? So we're not responsible for any loss arising from this content. This is just to educate you and kind of give you a structured thought process, which you can use as a base and build your own strategy on top of that, right? So that's the disclaimer. Now let's get to the details. So this is okay. The one lot is just to like show you get started, but of course like depends on what kind of capital you have and your confidence, your back testing, right? Basis that you can decide your position sizing. Okay, coming back to position sizing, this is one of my favorite all the time favorite topic. So your job number one is to protect your capital. So please deploy the lots as per your confidence and backtesting, right? So like just don't just watch some YouTube video and like do 20 lots, right? Please do your own backtesting. All right. So for this trade, we will be entering at 10:05 to 10:20 this window. We'll come to this why this window, right? And we will be having a hard exit at 1:45 p.m. if our target is not hit, because post 1:30 1:45 the market is slightly volatile because the other markets open on the European side of things, right? Okay, the theme. So it's a same day, basically the expiry day of Nifty on the Tuesdays. uh, this trade is non-directional, of course. It's a short strangle. So we will be okay. So these are quite obvious points. I'm just gonna skip it for now. Okay. So there are a few filters, all must watch. So I have created a list of filters before we enter this position. So the gap, basically like the gap up or the gap down. So ideally we want the gap up or down should be less than 25%. So if the gap is between 25% to 60%, you can still do this trade, assuming that assuming that the market is stabilizing. You need to watch the market till 10 a.m., right? From 9:15 to 10 a.m. If the market is stabilizing, and even if the gap up or gap down is in this range, as compared to previous day,
we can still think about deploying this trade. And if the gap is too high, we can skip it, because a lot of times the market comes back in a sharp move to recover, right, to close that gap. uh, so this is one filter you can definitely use. So these numbers are based on my experience, but you can of course do your own back testing and edit these numbers as per your comfort. Then there is this ORB range breakout, right? So you watch the market from 9:15 a.m. to 10 a.m. Understand what's going on there. If the opening range is less than 45%, so that wide opening range signals a trending day. So please watch the ORB, and also see for the ORB breakout. So if there is no breakout till 10 a.m., basically there's no direct expansion yet. So that's a good sign. Or if you see the market is moving in a trending, it's trending beyond the ORB, right? It's given a breakout. It's like going crazy. So typically in those days we would avoid our OTM non-directional trade. Also, we can have another filter where we talk about कोई large candle नहीं होनी चाहिए first 30 to 40 minutes में, because अगर कोई बड़ी candle है, so it's kind of volatile market, and that kind of market will definitely take our stop losses for this trade, right? और हमें ये भी देखना है कि price would be hovering around VWAP, right? VWAP का आप इंडिकेटर लगा सकते हो जीरोधा में, ट्रेडिंग व्यू में, anywhere you're trading. So VWAP is basically like the volume weighted average price. So ये सजेस्ट करता है कि आपका मार्केट कितना ट्रेंडिंग है. सो अगर VWAP के अराउंड मार्केट हवर कर रहा है तो मार्केट इज क्वाइट स्टेबलाइज्ड, ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं है. विक्स का भी आप फिल्टर लगा सकते हो. इफ विक्स इज बिलो 16, इट्स रिलेटिवली calm than compared to like a high VIX environment. Let's not trade on very events which are very important, like RBI policy hai, budget hai, koi data hai, which is going to come on that day or during the trading window. और हमें टिपिकली देखना है कि इसी विंडो में हम लोग एंट्री करें. लेट्स नॉट एंटर क्वाइट लेट, बिकॉज तब तक काफी प्रीमियम ऑलरेडी मेल्ट हो चुका होता. So these are few rules which you can use as a filter before actually trading, right? Before deciding कि हमें आज trade करना भी है कि नहीं. Doesn't mean it's an expiry Tuesday हमें trade करना ही है. Please, these are couple of rules, not couple, a lot of rules. इसमें से please pick one or two basis your back testing. These are suggestions from my side which will definitely help you to increase the probability of winning this particular trade. But yeah, it's up to you which rules you want to pick. Ideally, we should pick most of them. Okay, let's move to the next one. So rolling straddle versus VWAP. So एक volatility filter use करने का और एक तरीका है. It's quite straightforward. So if the rolling straddle is trending below VWAP, it's a suggestion that the premiums are melting, right? So I'll show you quickly on the simulator. So this is our stock mark. So if you see, this is a random day which I just picked just to show you. So यहाँ पे ट्यूसडे की एक्सपायरी है, या आप ऊपर का देख रहे हो वी वैप है, राइट? एंड ये जो स्ट्रैडल है इसका प्रीमियम्स मेल्ट हो रहा है, जो रोलिंग स्ट्रैडल है. So this is a good suggestion that the premiums are melting. So this is another filter you can. I typically use 5 minutes time frame, but yeah, it's up to you. So this is one of the filters which is important, showing that the market is relatively stable, and you can use it for your trade filter. ओके, स्ट्राइक सिलेक्शन. स्ट्राइक सिलेक्शन पे आते हैं. हमने जैसे बात किया था, वी विल टिपिकली ट्रेड ओटीएम कॉल एंड पुट जिनका प्रीमियम 8 से 12 के रेंज में है. तो बिलो 6 जो होता है वो क्वाइट लो है, मतलब इट्स नॉट वर्थ द रिस्क. एंड बिलो जो सॉरी अबाउट 12 जो है, दैट इज क्वाइट रिएक्टिव. सो वी वांट टू काइंड ऑफ स्टिक टू दिस रेंज, राइट. एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना है कि लिक्विडिटी, वी शुड हैव गुड लिक्विडिटी. typically होता है liquidity, we don't have to worry on the expiry date, but yeah, just have a look at the liquidity as well.
ओके, कमिंग बैक टू दिस 8 to 12, यहाँ पे इवन दो इट सेज 8 to 12, हम ट्राई करेंगे कि ऑलमोस्ट सेम प्रीमियम हम लोग बेचें, और बोथ ऑन द कॉल साइड एंड द पुट साइड. आई मीन, डोंट सेल लाइक 8 रुपए का कॉल एंड 12 रुपीज का पुट. ट्राई टू कीप इट almost equal, like 10 रुपए का कॉल, 11 रुपए का पुट, something in that range, right? So it becomes quite a symmetrical trade. So हमारे पास एंट्री का रेंज है 10 बजे से, सॉरी 10:05 to 10:20. So यूज दैट पीरियड एंड एंटर तभी करना जब ये ऑलमोस्ट सिमिलर हो, राइट? इस रेंज के जो कॉल एंड पुट्स है, इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर, बस एक का 1.5 रुपए का फर्क हो, राइट? So you can take this window to enter at the correct time. And okay, so once you enter this trade, coming to the stop loss rules. So let's assume कि हाँ, आपने, जैसे मैंने बोला था, आप एक 1.5 रुपए का फर्क रख सकते हो. जैसे कॉल का लेट्स assume हमने 10 रुपए में एंट्री किया, या पुट का हमने 9 रुपीज में एंट्री किया. सो हमारा स्टॉप लॉस पर लेग वुड बी 2x ऑफ दैट प्रीमियम, राइट? अभी जैसे कॉल है, कॉल 10 रुपए में किया है, तो उसका स्टॉप लॉस वुड बी 20 रुपीज. पुट जो है, अगर 9 रुपीज में हमने बेचा है, तो उसका स्टॉप लॉस वुड बी 18 रुपीज. हम लोग जो स्टॉप लॉस के ऑर्डर्स होंगे, वी विल यूज दिस SLM ऑर्डर्स, राइट? हमें लिमिट ऑर्डर नहीं करना है, क्योंकि अगर मार्केट एक्सपांड कर रहा है हमारे अगेंस्ट, लाइक मार्केट इज गेटिंग वोलेटाइल, तो वी वांट टू गेट आउट ऑफ द मार्केट एज सुन एज पॉसिबल. सो हम लोग इसमें जीरोदा में, आई यूज जीरोदा, सो आई कीप सेइंग जीरोदा, बट आई मीन इट्स सिमिलर अक्रॉस ऑल द ब्रोकर्स. आप ट्रिगर ऑर्डर्स लेवरेज कर सकते हो, जैसे कि आप जो भी कॉल है फॉर एग्जांपल, उस पर आप ट्रिगर लगा दो कि अगर ये कॉल का प्राइस 20 के ऊपर जाता है, to exit this call, at the same time exit this put also, right? And same trigger order you can put on the put option, saying कि यार अगर ये put 18 रुपए के ऊपर जाता है, तो exit this put, at the same time exit my call also, right? तो इसमें आपको कोई एल्गो ट्रेडिंग वगैरह की जरूरत नहीं है. दिस इज द सिंपल सेटअप विच यू कैन यूज ऑन द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो जीरोधा का है, या आई एम नॉट श्योर बाकी ब्रोकर्स में कैसे होता है, बट जीरोधा डेफिनेटली हैव दीज ट्रिगर ऑर्डर्स. हमें ओके, सो कमिंग बैक, exit both legs together, even if any of the SLH hit. Don't hold the untouched leg, because काफी बार मार्केट रिवर्स भी कर सकता है, राइट? इट्स नॉट लाइक इट विल जस्ट गो ऑन on one side, क्योंकि एक्सपायरी में इट टेंड्स टू स्टेबलाइज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज उसमें मैक्स पेन एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ जाता है. एंड ऑल्सो एग्जिट करना ही बेस्ट है जो लेग पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल कॉल ऑप्शन का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है कि ये 20 के ऊपर, सपोज 21 पे चला गया, राइट? तो ये जो पुट ऑप्शन है, इसका प्रीमियम 9 से मे बी लाइक इट विल गो टू 2 रुपीज, राइट? और मे बी लाइक 2 to 3 रुपीज. तो पुट में ऑलरेडी आपको प्रॉफिट हो चुका है, और उसका प्रीमियम काफी मेल्ट हो चुका है. सो इट्स नो पॉइंट यू होल्ड द पुट लेग, राइट? So it's better to exit the entire position. Okay, coming back to yeah, no widening of the stop loss under any circumstances, because अगर market move करता है तो these premiums can like double triple very quickly. So just exit if your stop loss is hit. Coming to target exit rules, okay, so जैसे हमने डिस्कस किया था, we will target 25 to 35% of the combined premium. कमांड प्रीमियम इज बेसिकली आपने जो भी कॉल एंड पुट सेल किया, अभी जैसे यहाँ पे कॉल आपने 10 रुपए का बेचा है, पुट 9 रुपए का, तो कमांड प्रीमियम हो गया 19 रुपीज, राइट? तो अभी जैसे यहाँ पे मैंने कुछ रेफरेंस के लिए दिया है 16 कम्बाइंड प्रीमियम 2024. अगर 20 है बेसिकली टोटल हमारा कम्बाइंड प्रीमियम, तो यू कैन टारगेट 5 to 7 पॉइंट्स, राइट? उतना अगर आपका हो जाता है टारगेट, you can just exit the entire position, and you can stop for the day for this particular trade. I mean, if you have other strategies, you can definitely do that, but yeah, this trade is done. तो ये वाला जो टारगेट्स है, these 25 to 35% बहुत जल्दी आ जाता है in ideal scenarios within like half an hour, or like one and a half hour.
सो इससे ज़्यादा नहीं टाइम लेते इतना, क्योंकि एक्सपायरी डे पे काफ़ी फटाफट प्रीमियम्स मेल्ट होते रहते हैं, स्पेशली ऑन द ओटीएम साइड। अगर मार्केट थोड़ा भी स्टेबलाइज्ड है तो यू विल हिट दिस टारगेट वेरी क्विकली। ओके, सो इवन इफ द टारगेट इज नॉट हिट, प्लीज आप 1-1:30 बजे या 1:45 PM इज द मैक्स, उससे पहले प्लीज एग्जिट द पोजिशन, इवन इफ योर target or stop loss is not hit. And yeah, no fresh entries or re-entries once target or SL is hit. Okay, so काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्विक रिव्यू, 10 बजे के आसपास एंट्री करेंगे, 10:05 to 10:20. We will be selling a call and a put in the range of 8 to 12. ट्राई करेंगे कि ऑलमोस्ट सिमिलर हो, डजंट मीन लाइक या 8 रुपए का कॉल 12 रुपए का पुट, ट्राई करेंगे सेम प्राइस पे बेचे, लाइक 11 का कॉल 11 का पुट। एंड स्टॉप लॉस हमारा होगा 2x ऑफ प्रीमियम ऑन ईच लेग, और कोई भी लेग का हिट हो जाता है स्टॉप लॉस, वी विल बी एग्जिटिंग दैट लेग एंड द अदर वन एज वेल। एंड टारगेट हमारा कंबाइंड प्रीमियम पे 25 to 35% प्रीमियम मेल्टिंग का होगा। ओके, सो दीज आर ऑल द रूल्स व्हिच वी डिस्कस्ड एज अ स्ट्रक्चर। अभी हम लोग स्टॉक मार्केट पे जाके लेट्स ट्राई सम सम ट्रेड्स, राइट। अभी फॉर एग्जांपल हमने एक सैंपल लिया यहाँ पे, लेट्स गो टू पीपल स्ट्रेटजी। तो ये हमारा 4th of November है। सो आई थिंक देयर आर सम सेबी रूल्स जिसमें यू कैन नॉट बैक टेस्ट ऑन द रीसेंट डेटा, सो आई एम जस्ट पिकिंग अ रैंडम डेट लास्ट ईयर्स। ओके, तो अभी हम लोग मार्केट को देखते हैं। अभी इफ यू सी 8 रुपए का यहाँ पे प्रीमियम है एंड 11 रुपए का है यहाँ पे। सो हम टिपिकली ट्राई करेंगे कि हम लोग एंटर करें जहाँ पे दीज आर ऑलमोस्ट सेम, या तो लाइक यू कैन लेट्स जस्ट एंटर एट 10 AM फॉर एग्जांपल। सो यहाँ पे लेट्स एंटर 9 and 11, ठीक है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 9 रुपीज का है और ये 11.6 का है। अभी इसका कमांड प्रीमियम देखते हैं। सो हमारा कमांड प्रीमियम है, लेट मी जस्ट क्विकली, 11.6 प्लस 8.8, राइट, 20.4। ओके, सो 20.4 हमारा कमांड प्रीमियम है, और हमारा इसका टारगेट रहेगा लेट्स से 0.3, राइट। 0.3 बेसिकली 6 पॉइंट्स। 6 पॉइंट्स अगर है तो 6 पॉइंट्स का अगर 75 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलमोस्ट 400, सॉरी 400 रुपये, राइट। तो लेट्स सी, हम लोग 15, ओके, हमारा ऑलमोस्ट 389 हो गया है। लेट्स गो स्लोली। ओके, हमारा ऑलमोस्ट टारगेट हो चुका है। Okay, that too within like half an hour, right? If you see on the both side. Okay, so this might be the ideal day. That's fine, which I picked, and it happened to be ideal day. So that's fine. आप ये multiple days पे please backtest करिए and ensure you backtest on the Tuesdays, right? हमें Tuesday को 10 बजे pick करना है, 10 से 10-20 के range में। एंड यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोनों प्रीमियम्स काफ़ी मेल्ट हो चुका है, एंड इट हैज़ हेल्प्ड अस गेट 27 रुपीज़। सो इसमें एक इस स्ट्रैटेजी का आई वुड से डाउन साइड है कि जब आप शॉर्ट स्ट्रैंगल्स करते हो ऑन द एक्सपायरी डे, सेबी ने काफ़ी मार्जिन हाइक्स किए, आपने देखा होगा आपके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में। द मार्जिन्स आर टू हाई ऑन द एक्सपायरी डे फॉर शॉर्ट स्ट्रैंगल्स, राइट। सो आई विल नॉट रेकमेंड कि आप जो आपका एग्जिस्टिंग ट्रेड्स का जो कैपिटल है ट्रेडिंग का, वो यूज करो इसके लिए। ट्राई टू लेवरेज योर होल्डिंग्स, राइट। अभी जैसे मेरा कुछ एक डेडिकेटेड ट्रेडिंग कैपिटल है, बट एट द सेम टाइम मेरे जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स है, मेरे जो ईटीएफ्स है, निफ्टी वीज है, राइट, निफ्टी वीज है या म्यूचुअल फंड्स है, तो जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी बड़ा कॉर्पस एक्यूमुलेट हुआ है। सो व्हाट आई डू इज आई जस्ट प्लेज देम, और वो जो प्लेज करके जो मार्जिन मिलता है उस पे आप ये वाली स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो, क्योंकि दिस इज अ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। एट द सेम टाइम इट नीड्स अ हाई कैपिटल, राइट। सो आप वो वाला कैपिटल यूज कर सकते हो इसमें, राइट।
But please, before doing anything, do backtest this and get to your own comfort before trying anything like this. Okay, so this is a sample. I hope you all have understood इसको कैसे करना है. Simply 10 बजे हमें these two options call और put हमने बेचा, और इस केस में आप 50s के भी बेच सकते हो because on expiry day जो आपके ATM के sorry basically even if these are ATMs sorry OTMs, ये ATM के पास में ही रहता है क्योंकि एक्सपायरी डे पे टिपिकली मार्केट स्टेबलाइज होता है, तो इवन इन दीज ऑप्शंस जो 50s में है आपको इनफ वॉल्यूम मिल जाएगा. सो इसमें ज्यादा बिडा लिक्विडिटी का इशू नहीं होगा. सो यू कैन पिक द 50 स्ट्राइक आल्सो. ओके, coming back to our rules. Okay, so quite straightforward strategy. मैं अब बस वापस कंक्लूजन में यही बोलूंगा, प्लीज स्टडी दीज रूल्स, राइट. ये जो रूल्स है इसमें से आप मोस्ट ऑफ द रूल्स पिक कर सकते हो, बट अगेन इट्स at the end of the day, every trader has its own comfort and own rules, own backtesting idea of things, right? So use this document as a structure for this Nifty expiry day OTM strangle. So use this document. I'll be sharing it on the Telegram channel जो हमारे YouTube channel के description में है. Please join that channel. I'll share this document there and use it as a base, right? और आप इसको base use करके design your own Nifty expiry day OTM strangle strategy. Uh, you know, it doesn't have to be 8 to 12. You can, maybe like have 10 to 14, or, you can have this target to maybe 40%, 50%, depending on your comfort and your back test, right? ये कोई recommendation नहीं है कि आपको बस यही वाले pick करने हैं, right? This is just my observation, but please do your own back test, and then you can have a similar trade. And also please start on single lot. आप धीरे धीरे इसको scale up करिए, see how it goes. And yeah, you can let me know the comments, your feedback, whatever it is. Would love to understand कि आपको ये videos कैसे लग रहे हैं, या how can we improve. Okay, again, before concluding, I'm not a SEBI registered RA or investment advisor. This playbook is just my observation and learning from market. Please do your own research and maybe consult a SEBI registered advisor before doing any trading, I would say. Okay, so yeah, that's it for today. Okay, I had a feedback earlier कि please आप जो strategy share करते हो तो do share backtest of last few years. Definitely we can think about it. Last के कुछ साल के backtest share कर सकते हैं, but at the same time I would want you guys to आप अपने end पे भी backtest करिए, because काफी सारे जो rules होता है, these are not hard and fast rules. Even though like people say कि काफी mechanical trading करना है, rule based trading करना है, but at the end of the day I think there is always human in the loop, right? I mean, even though of course I use algos for trading, but a lot of decisions I take basis my learnings. काफी बार मैं like few of these filters I keep editing, or like keep improving, say, or sometimes I skip one or two filters depending on my personal judgment as well. So that factor is always there, like even if I share कि यार ये स्ट्रैटेजी ने लास्ट ईयर में से 15-20% रिटर्न दिया है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको भी 15-20% रिटर्न मिलेगा, राइट? बिकॉज लॉट ऑफ द ट्रेड्स even though these are rule based, there is always the amount the percentage of personal judgment, right? So yeah, of course I'm thinking कि मैं बाद में इसका डिटेल में सारे strategies के back test भी share करूंगा, but again please do your own back test, so that's actually gonna help you to trade. So जब आप खुद बैक टेस्ट करते हो तो आप काफी सारा स्ट्रैटेजी के बारे में सीखते हो, कोई भी स्ट्रैटेजी, नॉट ओनली दिस वन, राइट? और जब आप खुद बैक टेस्ट करते हो तो आपको एक्चुअल कॉन्फिडेंस आता है दैट विल हेल्प यू एग्जीक्यूट द ट्रेड्स इन रियल टाइम, राइट? किसी और का बैक टेस्ट देख के डजंट मीन you'll get that confidence.
So of course, I mean, I'm with you. I will think about sharing the my own backtest result, but at the same time please do your backtest also. तो जब आप पर्सनली बैकटेस्ट करोगे ना, आपको ये फिल्टर्स के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलेगी, एंड यू माइट इवन क्रिएट योर ओन फिल्टर्स जिसकी प्रोबेबिलिटी जो मैंने यहाँ पे गाइडेंस दिया उससे और बेहतर है, राइट? सो दिस स्ट्रैटेजी एज अ बेस, एज अ डॉक्यूमेंट, as a structure will evolve much better, and it will fit your own trading style or your trading capital, or whatever your risk style is. So yeah, all the best with your trading, and we will be back next week with a new video. Please आपको वीडियो कैसे लगा, do let me know in the comment, or like share it with your friends, subscribe to our channel, right? I'll see you next week. Thank you.